Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So we have discussed about the cholinergic antagonist drug and we have completed the muscarinic blockers. Now in this lecture we are going to start nicotinic blockers. So in the nicotinic blockers are those drugs which are blocking the nicotine receptors, and there are two types of nicotine drugs blockers. So first is the ganglionic blockers and second is the neuromuscular blockers. So these are the types of nicotinic receptor blockers. So what are the ganglionic blockers? So there are two types of ganglionic blocker. First, a ganglionic blocker which block the ganglion which is present in sympathetic nervous system, and second ganglionic blocker is a blocker which block a ganglion which is present in parasympathetic nervous system. So these are the two types of ganglionic blocker. First is the sympathetic ganglionic blocker and second is the parasympathetic ganglionic blocker. So they are blocking the nicotinic receptors which are present in the ganglia, and they show no selectivity. Mean it doesn't mean if you give a patient a ganglionic blocker and you think that it will only bind to the sympathetic nervous system ganglia. No, it will bind on the sympathetic as well as on the parasympathetic ganglia. So if you give one ganglionic blocker, it will bind to every ganglia which is present in your body, whether it is sympathetic, whether it is parasympathetic. It is non-selective and show a whole entire block of your autonomic nervous system. So, and the drug which is ganglionic blocker is our nicotine. So nicotine is a component which is present in the cigarette, which is present in cigarette smoke, and it is a poisonous material and has undesirable effect and has no benefit. Okay, and it's this benefit, so you can record as a disadvantage depend upon its dose which you use. If you use high dose, it will block all the ganglia. Okay, so this was all about it. Now let's move on to the neuromuscular blockers. So where they are on the neuromuscular junctions, and on the neuromuscular junction like in the somatic nervous system. So I have drawn a diagram in the first lecture of it, and I have drawn how in the somatic nervous system. So this is the presynaptic nerve of somatic nervous system, and it will end on the effective organ. And what are effective organ in case of somatic nervous system? These are our what skeletal these are our skeletal muscles. Skeletal muscles. So on this skeletal muscle, this is the nicotinic receptor present. So they release acetylcholine, acetylcholine or nicotine, which will bind to it and show a response. Now, what the neuromuscular blockers do? They will block this junction. So they will block it and doesn't allow acetylcholine to bind with nicotinic receptor. So this is the neuromuscular junction between a neuron. So this is a neuron and this is a muscle. So neuromuscular junction. So it is neuromuscular blocker because it is blocking it. Okay, and not allowing it to bind with it and perform a specific reaction. Now there are two types of neuromuscular blockers on the base of their mechanism. On the base of their mechanism, they are of two types. First is the depolarizing neuromuscular blockers, and second is non-depolarizing न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स. ठीक है, एक डीपोलराइजिंग है, एक नॉन डीपोलराइजिंग है. सो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नॉन डीपोलराइजिंग की. यानी कि नॉन डीपोलराइज करने से क्या मुराद है? यानी इन्होंने किसी भी चीज़ को पोलराइज नहीं करना. अब डीपोलराइज किस तरह से होता है? सोडियम की इन्फ्लक्स से होता है. सो इनको हम दूसरे ज़बान में कह सकते हैं दीज आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या ब्लॉकर. ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या ब्लॉकर भी कह सकते हैं. अब इनका मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले मैं आपको इनकी ड्रग सारी बता देती हूँ और फिर हम इसका मैकेनिज्म लिखेंगे. सो अब हम इसका मैकेनिज्म
सो ये आपकी ड्रग्स आ चुकी हैं। सबसे पहले ये एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है जो डीपोलराइजिंग है, और दिस इज वाज द फर्स्ट ब्लॉकर विच इज़ यूज बाय द hunters to paralyze a prey. So hunters, whenever they prey, they find a prey and they will inject a cure on them in order to depolarize them, in order to block their neuromuscular blockers. So whenever their neuromuscular junctions block, what they happen, they cannot move. Okay, because this blocker is at muscle, and muscle of which skeleton muscles, and if a skeleton muscles cannot move, you cannot move. So therefore they are used to make the animal or a prey to stay still. Now next, these drugs are used and they have some words common in them, like these three have a curonium word common in them. So you just have to make memorize the word pan, ro and v. Okay, now this word you can see mava, curium, tuberculosis. ठीक है, so these are some name of the drugs which you have to remember it, and they all drugs are non depolarizing and competitive blockers. Now let's discuss about their mechanism. सो अब हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिज्म की। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने एक मेम्ब्रेन बनाई है, ये आपका निकोटिनिक रिसेप्टर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और इसके साथ ये एक आयन चैनल आपके पास दिया गया है। सो ये एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, ये रिसेप्टर हुआ है जो इफेक्टर ऑर्गन या आप कह सकते हैं स्केलेटल मसल्स के ऊपर होता है। सो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो मैंने बनाया है ये आपकी ड्रग है। लेट्स सपोज कि कोई भी नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाई है उनमें से कोई भी एक अज्यूम कर लें, लाइक र्यूक्यूरोनियम, मैं इसको अज्यूम कर रही हूँ, और ये जो डॉट है ये आपके पास एसिटाइलकोलिन है। आपको पता है निकोटिनिक रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करते हैं, और ये आयन एक आयन चैनल है तो सोडियम इन्फ्लक्स करवा रहा होता है, ठीक है। बट अब इस केस में क्या हो रहा है, अच्छा, ये आयन इन्फ्लक्स कब करवाता है, जब एसिटाइलकोलिन यहाँ पर बाइंड होता था और फिर सोडियम का इन्फ्लक्स अंदर होता था और डीपोलराइजेशन होती थी। बट अब हमने इस रिसेप्टर को ब्लॉक करना है और हम ये डीपोलराइजेशन नहीं करवाएंगे, तो क्या होगा कि ये ड्रग आके खुद यहाँ पर बाइंड हो जाएगी, एसिटाइलकोलिन को भी बाइंड नहीं होने देगा, इसको दूर फेंक देगा, और सोडियम को भी ये इन्फ्लक्स नहीं होने देगा, डीपोलराइजिंग नहीं होने देगी, क्योंकि ये नॉन डीपोलराइजिंग इनहिबिटर है। सो इसने डीपोलराइजेशन कभी भी नहीं होने देनी, खुद को बाइंड कर लेगा लेकिन डीपोलराइजेशन कभी भी नहीं होने देगा। सो चाहे हाई डोजेज में हो चाहे लो डोजेज में हो, इसका काम यही है। एक्शंस की बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म के बाद हम इसके एक्शन पे आ जाते हैं। तो इसका एक्शन बहुत ही सिंपल सा है। अब क्योंकि इसने देखें मसल्स हैं, मसल्स के ऊपर एक्ट कर रहा है और उनको ब्लॉक कर रहा है, सो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा आपके मसल्स की, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। और कहाँ कहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आपकी फेस के मसल्स, आपके फिंगर्स के मसल्स, आपके लिम्ब के मसल्स, नेक के मसल्स, NEC होता है, सॉरी, NEC के नेक के मसल्स हो गए। इसके अलावा आपके इंटरकोस्टल मसल्स जो आपके रिब्स के गिर्द होते हैं, सो इन सब मसल्स को, लास्टली डायफ्राम भी है आपके पास। सो ये सब मसल्स जो हैं वो उनको ब्लॉक कर देगा, उनको कंट्रक्शन करवा देगा, उन सब के न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के ऊपर ये इफेक्ट करेगा और ये काम कर देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आ जाती है इसके एडवर्स इफेक्ट की। सो इसके एडवर्स इफेक्ट इतने ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। देन इसकी अगर हम ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, किसकी, यानी कौन कौन सी ड्रग इसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है और रिएक्शन कॉज कर सकती है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स, यानी एंटी कोलिनर्जिक्स। सो जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं जैसे नियोस्टिगमीन, पायरोस्टिगमीन, उसके अलावा एंडोफोनियम या डिफरेंट ऑर्गेनोफॉस्फेट हमने डिस्कस किए थे। सो वो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग इसके साथ रिएक्ट कर सकती हैं और इसकी एक्शन को कम कर सकती हैं। सो ये उसके एक्शन को कम कर देंगी, इसलिए हम इन ड्रग्स के साथ, अगर आप एक पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर दे रहे हैं, साथ आप एंटी कोलिनर्जिक्स नहीं देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर देते हैं कि अगर आप एनेस्थीसिया देते हैं कोई हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन का, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन का आप एनेस्थीसिया उसे दे देते हैं,
तो ये उसके इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ कर देता है, इसके इफ़ेक्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। सो आप एनेस्थीसिया को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबॉडीज़ हैं, उनके लिए भी ये सिनर्जिक्स करता है, वो भी इनको इन्हांस कर देती हैं। सो एक तो एनेस्थीसिया हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन एनेस्थीसिया भी इन्हांस कर रहा है, और दूसरा है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सो ये भी उनको इन्हांस कर रहा है, उनको इंक्रीज़ कर रहा है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अगर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने की कोई दी जाए, वो भी इसके इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ करते हैं। सो 3 चीज़ें इसके इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ कर रही हैं। एंटीकोलिनर्जिक बस इसके इफ़ेक्ट को ओवरकम कर रही हैं। बाकी ये हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन एनेस्थीसिया, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दे आर इंक्रीजिंग द effect of neuromuscular blockers while other are decreasing. So this was all about the non-depolarizing competitive inhibitors or blockers. Now there is a there is depolarizing agents. So depolarizing agents are what they are doing. So there is one drug only which is present in the depolarizing, and this drug name is succinylcholine. Like acetylcholine, there is succinylcholine. So this is the depolarizing drug. What is going to happen? Its mechanism is consist of two phases. Its mechanism, let's discuss it. So in the phase number 1, what is going to happen? Let's consider again, this is a nicotinic receptor present on the membrane of your skeletal muscles, like that. Now what is happened, this is the acetylcholine, so it is never allow acetylcholine to bind, it will bind itself with this receptor. And here is the sodium channel which is present. Now it is allowing sodium channel to move sodium inside to take sodium influx. Okay, so after binding it, sodium will enter. In case of non-depolarizing, we have discussed that it will never allow to causing the influx of sodium, but this depolarizing agent is causing the influx of sodium and causing depolarization. And after some time, this is the phase number 1. In the phase number 2, this drug will bind itself with this receptor. Okay, like that. So this is bind with this receptor, and now more and more sodium influxes happen. So the concentration of sodium in that side will increase more, but the concentration of sodium outside is less. So due to more influx, now this channel will repolarize itself. Now it doesn't allow more sodium to move inside. Now this ion channel is repolarized. डीपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन होती है। सो ये अब चैनल रिपोलराइज हो चुका है। सो इसका मैकेनिज्म है, ये सेकंड फेज़ की बात है, और फर्स्ट फेज़ मैंने आपको पहले बता दी इसके मैकेनिज्म का। अब आप बात कर लेते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो आपने ये जो सुसिनाइकोलिन है, इसको हमेशा आईवी इंजेक्शन के ज़रिए से देना है, ठीक है। ये हमने फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट की, कि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं। सो एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ सुसिनाइलकोलिन। सो पहला जो एडवर्स इफ़ेक्ट ये है कि एक तो ये प्रोलॉन्ग एपनिया कॉज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं ना। इसके अलावा ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस करवा सकता है। जाहिर बात है ना, सोडियम को बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स करवा रहा है, सो इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंसमेंट तो हो सकती है। और जो पेशेंट जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुके हैं, उसको तो फिर आप ये नहीं दे सकते हैं। और हार्ट के पेशेंट को भी आप ये ड्रग नहीं देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी इसके साथ साथ आ रही है। दूसरा, ये हाइपर कैलीमिया काज करता है, यानी जो पोटाशियम की कंसनट्रेशन है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है ना। सो रेनल फेलियर का भी इस तरह कॉज बनता है। सो जिन पेशेंट का रेनल फेलियर हुआ होता है, उन पेशेंट को भी हम ये ड्रग
नहीं देते हैं। सो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने बता दी कि हार्ट पेशेंट को नहीं देना, रीनल पेशेंट को नहीं देना। एडवर्स इफेक्ट में पोटाशियम को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज कर रहे हैं और प्रोलॉन्ग एपिनिया कॉज कर रहे हैं। एपिनिया में ई आता है यहाँ पर, ठीक है। सो ये थे हमारे पास एडवर्स इफेक्ट किसके, डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की। सो आज हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने देख लिया कि किस किस टाइप के ब्लॉकर्स हैं। मस्कैनिक ब्लॉकर्स थे, उनको हमने पहले लेक्चर में देखा। हमने देखा कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो एंटी मस्कैनिक ब्लॉकर्स हैं। एट्रोपिन था, स्कोलापामाइन था, एल-हायोसिमाइन ड्रग थी, और इसके अलावा हमारे पास साइक्लोपेंटोलेट ड्रग थी, पोमाइड ड्रग थी। सो ये सारी ड्रग्स हमने डिस्कस किए और उनके एक्शन देखे, उनके एडवर्स इफेक्ट देखे। फिर उसके बाद हम आ गए निकोटिनिक ब्लॉकर्स पे। उनमें दो टाइप्स थी, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और neuromuscular blockers. So ganglionic blockers are of two type further, and we have discussed the drug which is a nicotine in it. Then the second type of neuromuscular blockers are the neuromuscular blockers, and they are of two types, depolarizing and non-depolarizing. So non-depolarizing are competitive and they are acting, and they have a lot of action. They not allow the depolarization, and they are working. And how they are working I have shown, and they're causing muscle construction in your face, finger, and your limbs and your neck, okay, or end of your intercostal muscles and diaphragm also. And what is the pharmacokinetics of it? So it is injected intravenously, so it is also given by the injection. And the non-depolarizing drug, its pharmacokinetics is similar, it is also given with the injection. Then after that we have discussed that its adverse effects are very minimal. Then what are the drug interactions, that they can interact with anticholinergics, with halogenated hydrocarbon anesthesia, with aminoglycosides, antibiotics, and the last is the sodium channel blockers. So these three are increasing their effect, anticholinergic is decreasing their effect, their action we have seen them. So all of these things are discussed. I hope that you will remember this lecture, and I hope that this lecture will help you to bind your concept, to increase your concept. So this was all about the today's lecture. I hope that you will like this video. If you like this video, then please subscribe to this channel, like my channel, and also press the bell icon to get all of these videos, to watch all of these concepts of free of course. So make sure you have subscribed to this channel. So meet you soon in the next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.